Yes. Hello, all. Welcome to the stream. Today we will be doing the last algorithm which is left in the rate limiter, which is the leaking bucket algorithm. And it is left since the last stream. So last stream we covered what we covered, sliding window counter we covered, and that is done. And while doing the sliding window counter, I just simplified the code very much instead of using many things at different places. It made the life little hell, but I understood this. And after this leaking bucket wala algorithm, what I'll do, I'll go back, I'll revisit the sliding window, fixed window, and all. I'll make these algorithms, make this code little simpler to understand, so that in the last stream, which is usually the explainer stream, I explain whatever I have learned over the days, and I summarize that in short amount of time and with the help of all the diagrams and all, so that it will be a complete journal for me and for you who is following this journey as well, so that they will know what we have done and what we have learned in the short. So nobody has to see the stream complete. Okay, so without ado, let's start. I was watching this PewDiePie's video. I try to make a manga. It is a very good video. PewDiePie is really nice. Okay, so let me start. Okay, so this is the one algorithm that is left. कहाँ से चालू है ये? I hope my screen is visible. Let me see. Yeah, it's visible. यार ये मैकबुक और माउस का कोई काम ही नहीं है, मैंने ये देखा है. कुछ कुछ काम नहीं करता ये ढंग से. Yeah, sorry guys for the late, but I'll quickly start. So we implemented the token bucket. If you guys remember, the first and foremost was the token bucket algorithm that we implemented for the rate limiter. The token bucket usually had this amount of fixed tokens, and then we used to have the refiller function. Refiller always being called whenever a request has been पार्स्ड. ओके, सो एक रिक्वेस्ट गया और उतने ही रिक्वेस्ट का उसमें टोकन हमने फिर से भर दिया, ताकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा, इट विल यूज द टोकन्स फ्रॉम द बकेट एंड ऑल द रिक्वेस्ट विल fulfill only if the number of tokens, if the number of requests coming to this bucket are more than the number of tokens available in this bucket, then all the request will be like get 4 to 9 error response, and that is how this will be done. And while doing that, I also I got an idea that how can we make this little fun game, so I am writing the test cases for this, the burst test cases, edge test cases, and all. So once I done with all the, sorry, like, so once I'm done with all the implementation of the algorithms, what I will do, I'll use those test suits, and I'll test all the algorithms one by one, and I'll get the analytics of that, and I'll rate which algorithm wins the race. So we will do that practice, and it is little fun. I really want to know like what's the real difference between them. ऐसे तो algorithm हम कोई भी implement कर सकते हैं देख के, but we want to know the real use case, so that whenever such things will happen in any project like in future, that we will know, okay, this is the problem, so this algorithm will suit over here. So will be +1 there. कहाँ से चालू है यार ये? Enough tokens है. This is not it. Yeah, यहाँ से. So leaking bucket algorithm. The leaking bucket algorithm is a similar to the token bucket. Yeah, that's what I said to you. Token bucket, except that the requests are processed at a fixed rate. Okay. So it is usually implemented with the first in first out queue. So I read about this queue and all. So this queue and all is like too much when we need so many things in place, like delay in the request and all those things. So that's when this queue comes in picture, and hence it is been widely used. So they have given one example. Which company really uses this? I guess Shopify, they said. Yeah, Shopify something site uses this leaking bucket algorithm. So it is first in first out kind of a thing, just like the queues. If you guys have ever been played with the queues, so you might know about this. Hello everyone. Hello Yash bhai, how are you bro? How are you brother? uh,
So yeah, in this one, the algorithm works as follows. When a request arrives, the system checks if the queue is full. Okay, so it's a very basic thing. If the queue is full, then that request won't be served. If it is not full, the request is added to the queue. So this is basically queue. Request will be added to the queue, and then one by one request is processed. Like let me draw something. So यार ये मेरा drawing वाला टैब कहाँ गया? मैकबुक में ना टैब गायब हो जाते हैं भाई without any notice. The tabs get vanish in the MacBook. You have to keep every tab in your mind. You should remember अच्छा कहाँ पे क्या था. The MacBook will not. Also I made this good. I hope you are doing well yourself. Yeah, bro. Yeah. Thanks for asking. I just did one lecture and I had some little extra day, like hectic day. But yeah, बहुत बहुत बारिश है पुणे में भाई. बारिश में बाइक छोड़ के आया मेरे ऑफिस में. I came by carpooling and it was like FDF. So I made a video on URL shortener. So I'm editing that. I hope I'll get time after this stream today, and I'll shortly post that video because I really liked how I explained in this. So without don't focus on that. So I was telling कहाँ गया ये भाई? ए भाई कहाँ है मार्कर? अरे ये इधर कब चला गया? जस्ट अ सेकेंड यार. ये मैकबुक का मेरे को टट्टी समझ में ही नहीं आता भाई. इसको बिना कुछ छेड़े क्यों अपने आप से ये सिक्योरिटी पैच और ये सब चीज़ें करता रहता है? इसको किसने बोला मेरे को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी? मेरे को नहीं चाहिए भाई. ये टैबलेट में स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है, इसको क्या सिक्योरिटी देगा भाई? डोंट चेंज द फर्किंग फकिंग वर्किंग एरिया. अलाउ भाई अलाउ. दिस इज द वर्किंग एरिया. फक. जो लोग भाई मैकबुक की तारीफ करते हैं ना भाई, उनको हैट्स ऑफ है भाई. इतनी टट्टी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखी है कोई. सो या बैक टू क्यू. So, see what this algorithm is saying. When a request arrives, the system checks if the queue is full. If it's not, the request is added to the queue. And this queue is little trickier part. So, for example, this is a queue. Okay, and request comes from here. So, request in. ये बहुत छोटा हो गया क्या? Yeah, that's what she said. Request in, and this is request out. Request out. Okay, so for example, the first request came and this is the first request. Then there is another request, then there is another request, and there is this. Let's take the five request. Okay, so there is a rate of leaking, like it is called leaking rate. तुमने thumbnail में देखा होगा. I have added the leaking. Great brother या कृष्ण कुमार. वाह कृष्ण जी खुद आए आज. Welcome to the stream, bro. So there is a rate leaking. Okay, so for our simple use case, we will take one request will be leaked per second. So that means for every second we will take this request out from this queue. So let's take 5 second ka timer. Then on the fifth second this request comes. Okay, now the timer remained 4. वो उल्टा ले लेते हैं, ऐसे नहीं, टाइम पीछे नहीं आता, टाइम आगे जाता है. सो लेट्स सी कि अभी 0th second है. ठीक है. So first request is served at 0th second. Then this 1 second हो गया, उसके बाद ये request जाएगा. Then on the second this, third, and then fourth. So like this 5 second में ये पूरा रिक्वेस्ट ये हो जाएगा. अगर 5 सेकेंड है, फॉर एग्जांपल पहला रिक्वेस्ट सर्व हो गया, दैट मीन्स देर इज अ स्पेस फॉर वन मोर रिक्वेस्ट टू गेट इन. सो वन मोर रिक्वेस्ट कैन कम्स pitch in the queue, and then that request can be marked to serve later once the succeeding request been served to the client. So this comes if we implement this in a very production level. Shared link on. No, I haven't shared. Oh, thanks for reminding me, brother. uh, लेट हो गया था तो मैंने जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया. डिस्कॉर्ड मैंने देखा ही नहीं आज. So let's go to general.
And let's add the Discord URL today as well. I'll have this Discord very restricted in coming time because I don't want a clutter of people like over there. So pin message. Yeah. Yeah, and one more update, guys. On Friday, I'm going for one AI agent ka session that I have been called to, and there will be some kind of a hackathon. I if I get some chance to have some hands-on on that, so on from that place, I'll come live and I'll show you. We'll build something together because AI का मेरे को भी इतना idea नहीं है कि क्या है क्या नहीं. So, but we have AI for our help. We'll do that. Okay, so Saturday we'll do that. Yeah, leaking rate, that's what I was explaining. Now this becomes a trickier part because which request to serve to which अरे यार hello. हाँ बोल ना. स्ट्रीम करत आहे. काय झालं बोल लवकर बोल काय झालं बोल बोल. हो हो चालेल मी तुला उद्या बोलेल मावशी ना मी आता त्याच्यात स्ट्रीम मध्ये. ठीक आहे. Sorry guys. uh, So yeah, so this part becomes a little tricky because which request to serve which client, this we have to save. Okay, all the other metadata and all these things we need to save in this queue details. So if you guys have used messaging queue, okay, so there is a message. For example, this is a messaging queue. There is a messaging queue. जब भी तुमने ईमेल इंटीग्रेशन किया होगा कोई सिस्टम में सो इफ यू गाइस हैव डन समवेयर समवॉट लाइक email integration so there is a service which sends an email. Okay, so not every time we create like everything email integration and all, so we basically use a messaging queue. So what does this messaging queue does? Messaging queues ask us to give a object, so that object contains two cc or bcc and message. Okay, message is like embedded HTML message. Uh, HTML message. Arey deva. So it is HTML message. Okay, embed होता है HTML message जो भी तुम्हें इसमें दिख रहा है ना. So not HTML tag नहीं होता है no, but I'm saying HTML में message होता है. So this kind of object and then it asks. So this becomes email का body. ठीक है, it is nested. So this is email and then it becomes from client. सो क्लाइंट में भी किसको भेजना है वो सब मतलब which app is sending this. For example, there can be multiple apps using the same messaging queue. So in this case, for example, our URL shortener can be the client over here and all those details that is not necessary over here. So these messages comes to this queue. Okay, so these are marked to send the messages, not exactly, and this is not a this our application never waits for the message to be sent to the user, to the whatever the user that message been marked to send. So that message simply goes to the queue and we don't get any response or something in our application ki this message has been sent or something. We just simply just get message added to the queue, added to the queue. Now the queue's responsibility becomes किसको message भेजना है, to whom do I have to send that message and when do I have to send the message. So for answer to the when, this is depend on how many messages are present in the queue. If there are five, for example, if there are five messages present and a six message comes in, so till the time all these five messages are delivered or maybe we get conclude on those messages ki it is done or not, or uh, like success or fail, whatever it is, uh, every message will have success or failure. So once these are get concluded, then only the last message which has been added will be
concluded. If it's success, it will be delivered to the correct audience. If not, a log will be generated and added somewhere so that we can go and debug and see why this message haven't been delivered. Is the problem with the two email ID or something, whatever can be the issue. So that is how a queue works. So this queue implementation is in itself is a very tedious job to do because we have to factor in so many different things. So, but now our simple goal in this case there is no distributed system as in we are just practicing the project, so we are only one to using this application. We are only one client and we are the god over here, so we don't need to have this tedious kind of a queue. So we need to have some simpler version to implement this leaking bucket algorithm, and hence I this algorithm for at the end, because even though it sounds very simple, but implementation of queue, if you guys, as I told you, it's not that easy. What you guys are saying, Shandon, yes, that will be exciting. Yeah, thank you. And so I was thinking about what other way that we can use this. So I have came up with the approach that we will use a system water level system. Okay, so what is this water level? So water level is something like this, as the name suggests, this is a container and there is this water limit. This is the maximum limit of this water. So as the water level goes down, that means a space has been created in the bucket so that we can add more water to it. So this same logic we need to use it in the leaking bucket algorithm. Okay, so yeah. Let me check the stream 1 second because I haven't checked the stream. Mm, okay, it's fine. यही देखना था मेरे को कि the stream is fine. Okay, so अब हम कैसे implement? Let's read the complete thing first and then we'll move to the implementation. So when the request arrives, the system checks if the queue is full, that I explained. If not full, the request is added to the queue. Otherwise the request is dropped. If the queue is already filled, then of course we are gonna send 4 to 9 error response code to the client, and that is what the whole goal of this. So this line is what the core agenda of this algorithm. Then requests are pulled from the queue and processed at regular intervals. Okay, so this regular interval, that is what the leaking rate is. So that's why I made this container. कहाँ गया? Thumbnail में, if you guys see, this is the leaking rate and all. So ignore my picture over there. That's little bit AI. Uh, then what all things that we need for this leaking bucket algorithm. So for this, the book is saying we need bucket size. Yes, of course, it is equal to the queue size. So that means we can see by this line I got the idea that we don't really need to use the queue over here. Okay, queue is not even necessary to implement this algorithm. That can be done without having the queue in picture. So, and I told you the reason and all everything I explained. The queue holds the request to be processed at a fixed rate. So that means bucket size and queue size will be same. And then comes the outflow rate. Outflow rate is nothing but the leaking rate that I just said. I just explained. So it defines how many requests can be processed at a fixed rate, usually in seconds. Yeah. So Shopify, an e-commerce company, uses leaky buckets for rate limiting. So this is a very good example. We cannot go and see how it is working in on their side, but they are using that. So this is a public information. And then this has some pro scheme memory efficient. Hey, this you we usually read once we implement.
the algorithm. So how can we implement this? So I made some notes कि कैसे मतलब not complete code, but I was thinking कि whatever they have said in the book, we will try to get this. So usually we start with a class leaking bucket algorithm, and as we said कि there will be a queue. Okay, so not exactly the queue, but queue will have some capacity. Okay, so we will have this private int final. Oh, sorry, final comes first. Final int capacity. So we will have this capacity. Okay, then what else we will have? We will have a double leaking rate. Okay, so leaking rate will be there. What else will be there? Water level will be there. So as I told you, water level we will maintain, and this will be again double, and then there will be a long timestamp. We need to have the timestamp saved of the last requests. So timestamp last request, let me write it very precisely. So last timestamp. So these all things that we need for this. So let's start with this only, then only we'll get the next idea what next we have to do. अरे यार ये ऐसे क्या हो गया इसका, इसको यहाँ रखे और इसको यहाँ रखे, ये सही है. तो I have created two files to save. These are empty files. So this is leaking bucket where we'll write the algorithm, and this is the service. So service may I have written, I did just overriding and all. So let's remove this all these things. So don't worry about this. We will do this again. मतलब मैंने लिखा नहीं है कोड, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है करने की. सो ओके. So leaking bucket algorithm. So what we said, we will need two variables. यार मेरा टेबल बहुत छोटा पड़ता है मेरे को. That's what she said. So private final int capacity is what we will take. Okay, and then private final double leak rate per second, and then private double, it will be not final because the water level we will keep changing. So water level, and then private long last time stamp. Okay, so these things we will need, and then we need to add the constructor. So let's add the constructor. We'll need two constructor, one with just to initialize with the capacity and leaking rate. Even though this will be constant for a application, we are not going to change that much, just for the testing purpose. But yeah, we need that, and then one with the all these things. So these two types of constructor that we usually use, and let's use the uh, these values. So these values are coming from our application properties. So in the application properties I have created these will be the rate limiting factors, parameters for the token bucket. This I have decided of the stream. Okay, so what this will have, it will have the leaking bucket capacity, like the queue capacity will be of 5 requests, and the leaking rate will be simply 1 request per second. So these two things that we want. So कहाँ गया leaking, leaking, leaking कहाँ गया भाई? Yes, here. So let me get this here, and let me correct the parameters over here. So this is what we need from application properties: rate limiter, this. So capacity value, and this is currently set to 5. Okay, so this is capacity. I'm just writing it here, and I'll just paste it over there. I'm just correcting the things, and then this is leaking bucket rate. Okay, so I'll use this over here. uh, yeah, and this is 1. So every 1 second this will be leaked,
So this becomes leaking this. So this we will use. Okay. So यहाँ पे हमें चाहिए ये, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही था ना। स्लाइडिंग विंडो में कहाँ था ये स्लाइडिंग विंडो? अरे यार मैं बाकी की फाइल्स क्लोज कर देता हूँ एक बार ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो या, so this, okay, so actually we don't need to have this over here, but yeah, this much only cap because we will use that in service, that I forget. So we can use that particular thing in the service, and the one thing, yeah, we need try consume method, so it is giving us the try consume method. So let me explain you why this. So usually this is of boolean, public synchronized boolean try consume, this method that we are using. Okay, so let me tell you how this try consume is method we can use. I'm like thinking ki what could be the better way, because I'm not that good at explaining the things, that because I'm seeing my streams back again, and I'm seeing ki I'm missing out some things while explaining, so I need to improve on that as well. So as I was telling you, we are keeping this very simple. So there will be a water level. मैंने कहीं पे draw किया था. Let me draw that again. So I'm taking this water level, correct? You know, guys, this is container, for example, and this is the capacity of, like, max capacity of this container, and this is the water level. This is the water level. Okay, and we have the capacity. Okay, so that means a new request cannot come over here because we are currently at the maximum. Okay, so that means if the water level is less than the capacity, okay, that means we can serve the request, so it will be true. Correct, correct. And then if not, then that will be, else it will be false. Like in that case we will send the 429 error. Correct. So this is what we need to keep it as simple as possible. But then once we serve this request, that means the water level will also increase, like a new request is coming up, so we will just add water level प्लस प्लस. ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का जगह खाली हो गया, लाइक दिस इज द न्यू वाटर लेवल एंड दिस इज द लेवल फॉर वन रिक्वेस्ट. सो न्यू रिक्वेस्ट की जगह हो गई एक रिक्वेस्ट आने की, वन रिक्वेस्ट विल कम ओवर हियर एंड वाटर लेवल अगेन रीच टू मैक्स. सो वी डिड वाटर लेवल प्लस प्लस, बट दिस रिक्वेस्ट हैज बीन मार्क्ड टू सर्व इन फ्यूचर, so we are returning true. Correct. So this is what our simple try consume method is. So here I can write, if water level is less than the capacity, then do the water level plus plus and then return true, so that this request will be served, else return false, that means 429. So this is the core algorithm logic for this leaking bucket. So this is the most simplest form can be possible. I hope I explained you uh, in a good way. Okay, so we need to again have one method for like लीक, कि हाउ दिस लीकिंग, लाइक ये भी तो कम होना चाहिए ना, कि कैसे वाटर लेवल वगैरह कम होगा, हाउ दिस वाटर लेवल calculated. And for this we, as in the token bucket, we had a method called refill, but here we will need some method called leak, and it will be of type void. So synchronized void leak. Okay, so in this method, now how we can calculate this leak? So if you guys are following, can somebody help or pitch in? uh, ज़्यादा ऊपर से जा रहा है क्या यार? आई एम ट्राइंग टू बी इट ऑन reward points credited. So can someone please review my PR, bro? I'm out now.
The filtering working well mostly, but keep running into this bug when testing in pre-prod. Oh, oh, there is some bug, bro. I need to see this. Okay, so yeah, it is giving us this logic. So let me explain you over here directly. So long now we are always taking this as the current time millisecond, then double elapsed time. So how we are calculating the elapsed time? कि last timestamp जो भी था, last request when the last request came, we marked their timestamp, that request timestamp. Is my screen stuck? No, it's not stuck. And then from now how much time has been elapsed divided by 1000, because that time is in milliseconds, so we are taking it into seconds, so we will get how many seconds has passed since the last request has been came to our water level. Okay, and now after that, key if this elapsed time, if the number of seconds is greater than zero, of course, if it should not be less than zero. So if it's greater than zero, then we are taking the water level. So water level will be current water level minus how much time has been elapsed in seconds into leaking per second. Okay, that means one for now we have only one leak request per second. That means one request will be uh, can I use the word ejaculated from that? No. That popped out from that queue, and that many seconds. So, okay, for example, it's been 3 seconds. So that means three request has been taken out from the queue, taken out from the container. So we will simply subtract from that current water level those many request. Okay, and we will do that, and just for the safety purpose it should not go less than zero, so we are keeping math max 0 and water level this and marking the last timestamp as now. Okay, so this is what our leak function is. So we have to call this in every method that we will be doing, because we are not running this job in the background, and that's why we need this. uh, हेलो भैया, डायरेक्ट प्रोजेक्ट करना बेकार नहीं है ना? नहीं है भाई। भाई देखो, जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है यार। जब प्रोजेक्ट करोगे ना तब अपने आप पता चलेगा कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, and then that will be a smart work. Then you can pick the correct topics to learn, you know, rather than it's always good application, it's always good way to learn in an application first manner. What does that mean? कि like in colleges we learn कि सब कुछ पहले सिखा देते, प्रोफेसर आते हैं सब कुछ सिखा देते हैं, C++ सीख लो, डेटाबेस सीख लो, सब सीख लो कब, लेकिन कोई नहीं बताता कि कौन से एप्लीकेशन में कहाँ क्या यूज़ करना है. सो बेटर कि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया आ गया उसके बाद सीधा एक प्रोजेक्ट बना लो, एंड देन उसके बाद तुम्हें खुद से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी. ओ इसके यहाँ पे ये यूज़ होता है, यहाँ पे ये यूज़ होता है, और यहाँ पे क्या यूज़ होता है मेरे को नहीं पता है, सो लेट मी गो बैक एंड रीड अबाउट दैट एंड आई विल कम. So that is a very good approach. So what's your name? Prashant Mishra. You are correct, bro. नहीं है, बिल्कुल भी बेकार नहीं है भाई. एंड डूइंग ट्रायल एंड एरर. पता है एक सिस्टम सबको लागू नहीं होता. कोई चीज़ किसी को अच्छा, किसी के लिए सही काम करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी. तुम्हारे लिए कोई अलग सिस्टम काम करता है. सो कीप working on that part, you know. So these are the only two, not only two, but these are the main mostly two methods that we will need. We will of course need how many second try after how many seconds, like we are doing in every fucking algorithm that we are doing it. Get remaining request, how many requests are remaining, get retry seconds, this and that, get request count, there's so many things we are doing. Let me close all the tabs. You know, I don't want to confuse you guys with the unwanted information. So now the part that I have gray area about is like how we can implement this service now. So first, I don't think we need to have the Redis cache over here and Redis cache at anywhere else. Okay, so we did very nasty things using Redis template over here, because this is not a distributed system at all, and just for our purpose of learning I used Redis, and that made the project a little bit hilarious, और क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मुश्किल हो गया उससे, वो नहीं करना था अपने को. तो लेट मी
आस्क दिस कि अभी इसमें क्या करना है अपने को, ये मेरे को नहीं अभी पता है, ये तो नहीं चाहिए. एंड बिन्स फैक्ट्री एनोटेशन वैल्यू, नॉट दिस, दैट वी नीड. Okay, so there is a check method that will be there. एंड आई होप यार तुम लोगों को ये सब ठीक लग रहा है. मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कभी कभी आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, कभी कभी आई एम गेटिंग वेरी डल रिस्पॉन्स ऑन द सिमिलर थिंग्स. सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ कैन आई बी ऑन द ट्रैक विथ ऑल यू गाइज. ठीक है, without further ado, let's do the bakchodi. So this is what the parameters that we use always. This time we are not using the Redis cache, and this time we will use, instead of Redis cache we will use क्या बोलते हैं उसको, एक map use कर लेते हैं. So concurrent concurrent map string linking bucket, yeah. So this is kind of thing we will use. Okay, so let me initialize this new concurrent hash map. ठीक है. So that is initialized, and let me add the constructor for these two things. So let me add the constructor for these two things which are not initialized, and here we actually need those values again from the application properties. Okay, कहाँ पे लिखा था मैंने ये, yes, these two. Let me copy these values, let me come to the leaking bucket limiter service, let me paste over here. Not here we are gonna use directly, but so let me copy this, let me copy this individual. Okay, ये इससे पहले लिखना है अपने को default capacity, यहाँ से हम application properties से देंगे, and then this value we will give it from here to this. Okay, और ठीक है, these two, and then let me correct the values from application properties. तो capacity we have marked it 5. 5 request का ही capacity है अपना queue का, अपने bucket का. पहला गड़ीगारद. So this is the name, value बस ये अपने identification के लिए लिख रहे हैं, ये इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है. ओके, देन दूसरा वैल्यू कहाँ है भाई? क्या बारिश हो रही है यार, क्या बारिश हो रही है भाई. कपड़े मेरे भारी है भाई, मैं भूल गया, अब जाने दो, ऐसे भीग गए. So this and this is 1, leaking rate is 1. Let me write it 1. यार किसी को ये पता है क्या कि मैं इसमें जाके कोड रीफैक्टर या फॉर्मेट कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है भाई. क्यों नहीं ये आता? एक्स्ट्रा डिलीगेट, एक्स्ट्रा इनलाइन, मूव, सेव, डिलीट, पुल. अबे बैन भाई, मैं कैसे इसको फॉर्मेट करूँ भाई? इसके लिए मेरे को यूज करना पड़ेगा लग रहा है कोपायलट. हाउ टू फॉर्मेट कोड इन दिस कंपाइलर. IDE और कंपाइलर जो भी, डोंट कॉल मी आउट ऑन दैट. प्रेस कमांड शिफ्ट एल. कमांड, अब मेरे इसमें कमांड कौन सा बटन है भाई? कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ मैं. कमांड शिफ्ट एल. एल कुछ नहीं हुआ भाई. You can add a code formatter plugin which or code reformat. कोड कहाँ है कोड? ओके, यहाँ पे है क्या कोड? where the fuck is reformat option? Generate code, compile, code completion, inspect code cleanup, whole custom. No, reformat code, is it? Okay, okay. But no, it didn't did what it should did. Reformat code. ए इसकी माँ का.
ये क्या बोल रहा है कि डिफॉल्ट इज असाइंड बट नेवर एक्सेस करेंगे दोस्त, रो नहीं अभी। ठीक है, now this is the check method that we are using. Let me see any message. भैया actually I have a double, क्या क्या भैया एक्चुअली आई हैव अ डाउट। भाई मैं यहाँ पे डबल डबल देख रहा हूँ तो मैं इसके डाउट को भी डबल रीड कर रहा हूँ। भैया एक्चुअली आई हैव अ डाउट, एक्चुअली आई वॉच यूट्यूब tutorials but I don't see any outcome so I follow you. Oh, okay, okay. Bro, I'm not also a tutorial na. Agar uh, if you really want to see these things, and then it's fine कि this is how these things work. See, let me tell you how this approach, because कल रात को मैं 2 बजे के करीब बैठा था, 2 से 3, तो I was taking out these notes to understand just the algorithm, not this service तो, just this algorithm, क्योंकि algorithm ही समझना सबसे difficult part होता है. So I follow this approach. I use pen and paper if you wanna follow this, and then I draw the diagrams, and then I understood how it works, and then I do. Okay. And code wise, I'm still not that good in Java, because you guys know, if you guys don't know, that I'm my whole point of doing this learning in public thing is to learn the Java. I'm very good at JavaScript. I can say that at this point, because for writing the code in the JavaScript, I don't usually need AI. But now that I'm good, now that I'm new to Java, so I usually take help from co-pilots, from AI agents, and all to help me write the code and help me understand the things. So you can do the same, bro. So these are the daily headaches of a developer that someone goes through. So you can have a feel about that, because I know many of you are feeling missing out on this feeling, because you guys are directly writing code using AI, and you are not even getting this kind of a feeling. You guys are never been not visiting the Stack Overflow sites and all, but ChatGPT has become the source of truth. So yeah. तुझ्या रूपानं येड लावलं भल्या भल्यांना वेड लावलं. So I have implemented this rate limiters interface which I created. It is just simple check method of return time rate limit result. So let me show you if you guys are अबे यार हाँ. So it has two types of rate limit result. So it can be one either allowed or either blocked. So allowed may we have to send the capacity and remaining request, because we have to show it to the user. And in the blocked one, we are using same capacity remaining request. It will be 0 because it's not a point. I don't know why wrote this in here. It will be always 0 now if the request is blocked. So how many requests are remaining? Logically, there are none. What the fuck, bro? Why I wrote this? I can do this as well, no? Like this. Does Java allow me to do that? Default value. Uh, why it's crying? Expected comma. अबे how to give default value? How to give default value to these parameters in Java? Shava shava mahiya se shava shava mahiya be shava shava. Oh, okay, okay, because it's this, so it's that, and it's this. So if can I do this? So it becomes the value assigned to this never been used, so remove redundant assignment like this. So let's keep it the way it is. Okay. Uh, this, so in this one I'm just overriding this method, and now we want to have the key as usually. So let's start with the key. Every method we have almost same key, so let me copy this key. I'm not gonna write each and everything again because I'm not L. So rate limits, not sliding window, bro. It's leaking bucket. Okay. And then the key will consist of request client ID,
then path, and then method. So it will make our one key. Okay, this key will again change, but this is it. Okay, so now what comes the logical? So logically we have to check in our map this buckets key if this kind of a key really present or not. Okay, so if this kind of key present or not, so we'll check that. So how we will check key this bucket? Let me copy this bucket and let's get key. Okay, and what is this type? Leaking bucket is equal to this. Okay, so if this bucket is empty, so what does that mean? So if that bucket is empty or null, then that means we have to create a new bucket. So that at for that key particularly, it this doesn't exist. So bucket equal to null. Then in that case, leaking bucket should we have to have like this? So no, let's wait. Let me just write first right hand only, okay? Because I don't know what to have on the लीकिंग बकेट में हमें क्या क्या देना है डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी एंड लीक रेट देना है ठीक है so these two things we have to give and we'll assign it to this bucket only yeah I'm that kind of a developer कि when I write the right side part of the equation I then understand okay I have to do this on the left side but and then we insert this in the concurrent map so put uh, this key and bucket. Okay, so this part is done. What it's saying, a computative absent मेरे को नहीं यूज करना है क्योंकि मेरे को नहीं पता है computative absent कैसे इंटरनली काम करता है जब तक वो उसका इंटरनल नहीं मेरे को समझेगा मैं नहीं यूज करेगा मेरे को सजेस्ट करना बंद कर दे भाई तुझा रूपान any messages no message guys please do like the stream यार unless or until you guys like the stream the newer viewers wouldn't get a notification that this motherfucker is again live and doing something over here so please do like the stream guys तुझ्या रूपानं वेड लावलं भल्या भल्याना वेड लावलं so now yeah yes correct bucket try consume because we have this method and if allowed then we will send return return yeah allowed wala this get capacity and get remaining capacity so all these things we have to create okay we haven't created these things if not मतलब blocked है तो उस time पे भी we will send the rate limiter result but blocked so rate limiter result dot blocked and then all these things ओके सो वी नीड दिस मेथड सो इट इज़ वेरी नाइस ना कि पहले यहाँ पे जाके बनाओ क्या क्या मेथड चाहिए फिर जाके अपने अल्गोरिदम में चीज़ें बनाओ सो गेट कैपेसिटी सो लेट्स गो बैक टू दिस अल्गोरिदम एंड यहाँ पे इट्स जस्ट अ गेटर यू नो सो लेट मी गो एंड ऐड मज़ा आ रहा है आज कैपेसिटी लीक रेट का गेटर नहीं चाहिए लास्ट टाइम इसका ही चाहिए अपने को गेटर बाकी का सेटर्स फॉर रीड हाँ हाँ चल चल बाग को मत सिखा then get remaining capacity अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा so let's write this method first over here public int get remaining capacity अरे इसने कोड ही दे दिया capacity minus water level या true oh is it that simple capacity minus water level is yeah of course it's very simple so this is done no I'm sorry like have you guys liking the stream please guys I do like the stream here I'm seeing you guys are like tuning in but not liking the stream. I'm on the last algorithm of this rate limiter. If you guys are following the streams, there are total 5 types of algorithm to implement rate limiter. You know, so I'm just briefing you all. There is the first one is token bucket. We implemented this on the day one of the stream. Then we moved to the fixed window counter. We implemented this in the day two and day three. We did the sliding window.
day 4 we did sliding window counter as well. And then now this is the last sixth day, we are doing the leaking bucket, and then we are completely done with all types of algorithms. So after this I will go back, and when I was doing all the algorithms, I understood what mistakes I did. So I'll correct those mistakes, and I'll come up in the last stream, and as usually as I do, I try to explain all the things what I learned over all these 4 or 5 days of streams. Okay, what I started with the goal, what was my understanding before starting this, and what many all things that I learned, and through the system design diagrams and all, I'll try to give it a brief so that it becomes a complete picture for all of you and me as well, specifically. And then after that I got a very good idea about this, so I thought I'll create a game, something, okay, to test all these things, and I'll make these algorithms uh, क्या बोलते हैं उसको fight each other to get the first rank in our game. So I'm writing some few test cases. So those test cases contain some boundary conditions, some burst conditions and all. So I'm thinking of, I know right now only 5 or 6 parameters on which I can test these algorithms. So I'll test each and every algorithm. I'll take out the results in the JSON form, and I'll show it in a graphical format, and at the end we will know which algorithm is the best. So we will do that, and I really liked that idea. So if you guys wanna watch that, do let me know. Okay, so should I start a poll for that? I haven't started any poll. मैंने क्या किया पता है आजकल? आई एम स्ट्रीमिंग इन वेरी रेस्ट्रिक्टेड environment. I'm not streaming for shorts feed. I'm not streaming for this. I'm starting the stream from the subscribers base, and then I'm doing that. So okay, let me ask this in a Q&A. Okay, so I'm starting a poll. Do you want to see these algorithms fight each other? Yes, no, and one more uh, in stream. Okay, so I have added a poll. Let's see. Bala bala na vidla bala. Okay, guys, do like the stream, and I have shared a poll. Let's see. And if you guys are joining the Discord or not, I don't see any new people joining. And how many people are like this? Meow. Okay, so yeah, this part is done, I guess. So I guess we are done with this, no? Can we test it, or is there anything left for that? I don't think this check method is done. So I will need subsequent the underlying project to be also running. So what is the underlying project? It is the URL shortener. Yes, you guys are right. So open it in a new window and run this underlying to our API gateway, so that our API gateway can send the request to this underlying application. So let's start this application. Uh, do 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 do. Satya, Satya. It will not work. I know it will not work, but I'll not tell you guys why it will not work. I wanna keep that as a mystery. ए, अबे ये कहाँ बंद हो गया भाई? मैंने बोला न्यू विंडो. अबे ये अच्छा, ये ऐसे हो गया इसका. ओके ओके, they have changed the UI. Backend this leaking rate. Yeah, let's start this. I have made this primary, and I hope all these things are correct. Let's start the server. And one more thing we need, which is postman. टेस्ट कहाँ से करेंगे? घर से थोड़ी ना टेस्ट करेंगे भाई. So let me add the postman. Yeah, you come here, you go there, and then this. So get shorten URL 8081. Let's hit it, and it will fail.
it will fail. If you guys know why it will fail, you should be knowing this by now. Why it will fail. It didn't fail. Hello, bro. Just saw your channel for the first time. Tejas, bro. Hello, hello. Welcome to the stream, bro. I hope you liked what you saw because there is nothing, anything meaningful that I'm doing over here. Hey, is it working? Why it's working? Is the Docker container running? Because I do remember I didn't started the Docker because without the Docker and the Redis, because URL shortener internally using the Redis container, but why the fuck it worked? No, it shouldn't have worked. Oh, because we are shortening the URL. If I go and do the get call, it will fail. Yeah, internal server unexpected error. Yes, because for the get call we have Docker and we haven't started it. Is it telling us the error? अरे ये इसका टर्मिनल है भाया. भाया ये क्या कर रहे हो भाई? See, abstract connection refused to this local host. How can we lambda connection? Is it saying the Redis explicitly? Yeah, Redis connection exception because Redis container चालू ही नहीं है Docker. इसको चालू करते हैं. तू जा भाई, अब तेरा काम खत्म. Now it will work. Yeah, 302 found. So usually if you know how the URL shortener works, the GET request work, it doesn't give us anything in the body. It gives us the 302 response code. There are two types of response code, 301 and 302, and it gives us the location. And the browser internally takes this location and redirects it. So आप अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना है. उस पे एक अलग से प्रोजेक्ट हो चुका है. So this is the वी वांट डू. अभी इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है. अपना रेट लिमिटर कि 5 रिक्वेस्ट अलाउड है. अपना क्यू का कैपेसिटी 5 है. तो लेट्स सी. आई डोंट नो हाउ इट शुड वर्क. एक दो because every second it is one, so it is not doing anything. So let me change. यार मैंने इसको प्राइमरी किया, यहाँ से प्राइमरी हटाया. अगर मैं दोनों को प्राइमरी दूंगा तो क्या होगा? स्क्रीनशॉट निकलेगा. लेट मी रिड्यूस दिस कि इसका कैपेसिटी 1 है और लीक रेट 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड की तरह की जगह. या लेट्स सी. आई डोंट नो, इससे कम तो हम नहीं कर सकते ना यार. इससे कम क्या ही मोल भाव करेंगे. लेट्स रन. कैन यू शेयर द डॉक? शिव कुमार. हेलो शिव कुमार. कौन सा डॉक? मतलब मैं नहीं समझा. अच्छा, दिस डॉक. दिस इज नॉट अ डॉक ब्रो, दिस इज अ बुक. ये पूरी की पूरी किताब है भाई. कायनात है कि ये सिस्टम डिजाइन का बुक है. बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, एकदम लाजवाब बुक है भाई. इफ़ यू गाइज वाना हैव इट, मैंने डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी लिंक शेयर कर रखा है. डिस्कॉर्ड का लिंक पिन चैट में है. तुम लोग जाओ उसमें ये करो. मैं डिस्कॉर्ड कुछ दिनों में रेस्ट्रिक्ट करने वाला हूँ. आई डोंट वाना कीप दिस ओपन फॉर अनवांटेड पीपल बिकॉज आई एम सीइंग समथिंग समथिंग. सो प्लीज डोंट. सो अभी मौका है, कर लो. बिकॉज आफ्टर आई हिट द 1000 सब्सक्राइबर्स I'll just make that very restricted. Hello guys, can you hear me now? Can you hear me now? मेरा लैपटॉप बंद. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? I guess it started. Yes, it's working. Yeah, yeah, yeah. Thank you, Shiv Kumar, bro.
या थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अरे यार मैं लैपटॉप फ्लो में भूल ही गया लैपटॉप चार्ज पे लगाने का। यस थैंक यू यश, थैंक यू। Yes, nice. So where I was reading this, can you share the doc? I have shared that. Yeah, I was telling you guys, I have shared this in the Discord channel. If you guys wanna use that, then yes. So there is link. और अगर तुम लोगों को Discord नहीं यूज करते कुछ नहीं करते तो do text me on the LinkedIn. So let me add my LinkedIn as well and वहाँ पे बस मेरे को मैसेज करो कि क्या है कि तुम स्ट्रीम से आए हो एंड आई वांट दिस ओके सो दिस इज माय लिंक्डइन। वहाँ पे मेरे को टेक्स्ट करो देन आई शेयर यू ऑल वट एवर द डॉक्यूमेंट यू वांट। वहाँ पे ज़्यादा बकचोदी करके मेरे को मैसेज मत करो कि ये वो। ठीक है, कीप इट सिंपल। अभी अपना चला क्यों नहीं वो देखना था ना अपने को। हमने चीज़ बनाई अभी अभी उस चीज़ को टेस्ट कैसे करें, 429 कब कैसे लाए हम इसमें 8081। let me log into the codex. uh, Update bro, update. In which company you work bro? I have shared the LinkedIn, brother. I'm not supposed to say my company name upfront in the streams, so this is some warning that I got from company. Yes I can hear. Yes, yeah. I missed some message. I use Zafia. Hello bro, long time no see. Guys please do like the stream yara. Please like the stream. Now I have to ask the codex that how can I test this particular thing, because there is no way. It is a very efficient algorithm, that's why we are not able to test it very upfrontly. So bro, can you अरे login तो कर ले भाई codex. How many tokens do I still have on this? Yeah, 99% left. बहुत है भाई, अमीर है अभी हम। Bro, can you check if my leaking bucket algorithm implementation is correct? Not perfect, but just correct. उसके बाद हम उसको दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे कि टेस्ट कैसे करेंगे हम भाई बता, क्योंकि ये फेल ही नहीं हो रहा। इस algorithm cannot be super good कि there is no way that uh, it wouldn't fail. I found the leaking bucket classes and a few related rate limiter implement. I'm going to read. The core logic is small enough to reason about directly. I'm checking the Spring writing wiring too, because algorithm can be logically fine but still behave incorrectly if the app selects multiple limiter services. Yeah, that shouldn't be have, because we have multiple algorithms implemented and I marked this particular service as primary. So Spring Boot supposedly take this service as the primary, because in the filter where all the services has been used, injected, this is the place। कहाँ गया ई filter कहाँ गया अपना? यहाँ पे filter, sorry. So in this filter you guys can see I'm taking the instance of this service, okay, injecting this service final rate limiter service, this, and this rate limiter service is a interface which we are implementing in each and every type of service. So this is leaking bucket service and still implementing rate limiter service, and that only check method is necessary. Hence in the filter doesn't know which service to pick on, so we have to explicitly tell Spring Boot, bro, this is the primary, so pick this, pick me. What it's saying, bro, not fully correct as is, but it is close. Main issues is this: allows when water level less than capacity, then adds one. That can overfill the bucket. Example this: for strict leaking bucket, use water level plus one less than capacity water level plus plus. Is it? Can this? Yeah, this is logically true। लॉजिकली ट्रू है ये, है ना? है ना? है ना? बोलो बोलो।
यार मॉडरेटर ने ज्वाइन नहीं किया आज. वेयर इज द मॉडरेटर? मे बी बिजी होगा, एक आध दिन उसको भी छुट्टी चाहिए भाई. शिव कुमार शिवांश कुमार bro, welcome to the Discord server. I'll restrict the Discord server ka intake once I hit the 1000 subs. So where are we right now on the subs count? Even though I don't care about the subscriber, but yeah, almost 976. So 24 subs later, we'll just close this. Oh, I got a comment from you, Prashant Mishra. भैया एक डाउट है का वीडियो डायरेक्ट प्रोजेक्ट. हाँ यही तुमने पूछा था, सो आई आंसर्ड यू ऑन द स्ट्रीम ब्रो. आई on the stream. I hope you got your answer. Hannah, bolo bolo. So this is there. So let's test it again because yeah, it gave us this. Oh no. अभी ये गलत है कोडेक्स वाला. अगर वाटर लेवल +1 करेंगे तो एक और हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे उसमें. तो इट इज अ टू वे सॉर्ड नो. I don't think कि codex is that smart, you know. अरे अनिरुद्ध gamer, hello bro. How are you? How's your funding round going on? Yes, I can hear Azufa. Ayuzaifa. It's a really cool name though. I should probably have this. Yeah, but this condition will always give 4 to 9 error for every request, not request, for every fucking request. Fucking request. Are you dumb, Codex, bro? No, that condition will not 4 to 9 every request with your configuration behavior. Water level 0, request allowed 1, leak 0.5, water 0.5, water plus 1, 1.5, yeah, capacity greater than water level greater than capacity true 1, so blocked, leak enough water though this blocked. So with capacity 1 leak rate per second, it allows roughly 1 request per second. If you send request faster than that, 4 to 9 is correct. So I'm sending this. What headers I'm getting? X rate limiting, it's 1, it's still 1, and why it's giving me 4 to 9? Let me give him this things. So copy, still for every request it's 4 to 9. यार ये कोडेक्स ना कुछ बख्शो, ये गलत, ये मतलब लगा सही है लेकिन ये नहीं हो सकता ना सही हर बारी. तो ये कभी होगा ही नहीं ट्रू वाटर लेवल. गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार. यार मेरा स्क्रीन स्टक है क्या यार? तुम लोगों ने बोला ही नहीं स्क्रीन स्टक है यार. अबे यार मेरे को लगा ही था ना ये डिस्कॉर्ड बकचोदी कर रहा होगा. हट यार, इतने देर से मैं मतलब अंधेरे में ही चल रहा था, तुम लोगों ने बताना चाहिए था ना यार. The exact every request is bug. What the strict less than operator, I have patched that, and the service selection issue. Now I am running test too. अच्छा लेस देन और इक्वल टू दिस ये किया इसने. ठीक है. इसमें हमने लीक नहीं डाला था. So let's do one thing. Let him do its thing, and we will do our thing. So let's go over here.
go to this, run this, because we haven't added this check equal to. This we had only less than. So it should work maybe now. Yeah, it worked. And X rate limit 5 and rate remaining this. So let's hit one more, 3 remaining, 2 remaining, 1 remaining, and 0 remaining, and 4 to 9. Yeah. Yeah, it's working. It's working now, and it's saying try again in 48 seconds. Let's see how many seconds now. 41 seconds. Let's see. 37 seconds. 36. 34. Let it work. Let me read the messages. As I told you, I came to Mumbai 4 days ago for my startup's fundraising. My uncles introduced me to his boss as a potential investor to for my company. I think he's still considering it because I haven't received any response from him yet. Okay, received any response from. Okay, as I told you, I came to Mumbai. Yeah, ये मैंने पढ़ा तुमने फिर से लिखा है startups fundraising. Yeah, yeah, bro. That's a good thing that you are doing this. Don't delete the messages. Don't delete the message. I think the YouTube had that bug that retracted messages can be seen through this, but now they have fixed it. So is it done? Yeah, it's done. Okay, so this is how the fucking leaking rate is been implemented, and that is what the today's goal was. And what's the time right now? It's 11:30. So I started at 10:30. By 11:30, with all the talking nonsense and implementation, I still did it. So hands क्या बोलते हैं उसको? Hands off, hands on. यश मिश्रा क्या बोलते हैं यार उसको? Round of what the fuck, bro? Talia for me. So this is done. So it comes to a good end that we have implemented limiter rate limiter with all those things. And before starting this rate limiter, I didn't even know कि what the fuck is rate limiter is. बस एक ही चीज़ पता थी, it gives us 4 to 9 response, but when, why, how, we didn't know anything. But now that we are almost good level in that, almost expertise, so that we can now answer each and every question, whatever we come across. So this is something a good kind of a feature that we have now as a backend engineer. So hope you guys liked it, and please do like the video. So now in the last stream that I'll be doing on the Saturday I'm doing one hackathon ka stream. I'm going for a hackathon. So from there I'll stream. So please do join that stream. Okay. So I may be streaming from somewhere unknown place. So please do join. There is something AI agent. I also don't know what the topic will be exactly. So yeah, bro, I'm feeling bored right now. Actually, work on my, yeah, you told that last time because your work is done. Actually, work on my startup is still going on because we are in discussion with investors. But at the moment, there's not much for me to do. So I'm just sitting around and getting bored. I'm thinking about starting something new. Can I ask you a question? I want your opinion on whether I should build or not. Yeah, please ask. Agar is it if it will be within the range of my expertise, I'll answer you. So yeah, this was it. So what I'll do in the last stream, now after this stream, I'll just fix whatever the errors present in this all the implementation that I did. I'll first go and remove this Redis. This is made my life hell because यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं था और मैंने घुसा दिया Redis. So it made a little bit of difficulties, but worry not. Just like this sliding window counter, I made it very simple to understand for me, for you. So similarly, I'll do this to sliding window algorithm, do this to fixed window algorithm, and do this to the token bucket. And after that, I'll draw the good system design diagrams. Whatever I understood, I'll take the reference from the book. सब कुछ मेरे दिमाग से नहीं होगा, मैं ये book का reference ज़रूर रखूँगा. This book is very good book. And based on that, in the last stream, I'll explain you whatever I have learned over these 6 days of streams. 5 days you can consider. पहला दिन तो setup में जाता है, so ignore the first one day. And over these 5 days, whatever I have learned, I'll explain that in the last stream. I don't know. I can't stream 2 times in Saturday on Saturday. I can, but I won't.
But on Sunday, surely I'll do a stream. So stay tuned for that. Oh, is it Friday today? Oh, it's Thursday, so I can stream tomorrow as well. But tomorrow I have some. I'm getting some office messages, so I have to work on that. Uh, so I'm not sure कल कितने बजे time मिलेगा मेरे को. I'll be going to office. I'll be meeting to a friend. I'm not sure. So, but maybe on this weekend I'll give you a good final stream on that. I'll not do any kind of a bakchodi over there. I'll just keep everything on the point because I have seen people really wanted to see and not the extra talking that I do usually. So okay, so this was it. I hope you guys understood. I didn't wanted to end the stream that early because I'm on so much of energy, even though it was a very long, hectic day, but I don't know why. So yeah, if you guys have anything to ask, please do ask. Uh, you were about to ask Anirudh. I hope you asked. Should I build it or not? Did you ask the question? You didn't ask the question. Please do ask the question. And if you have anything to share, and let me see the guys progress ना जो हमारे चैनल पे आते हैं हमेशा कहाँ है सब्सक्राइबर्स प्रोफाइल. I want to see where all these guys are right now. ये क्या हो गया मेरे इंटरनेट को भाई. इंटरनेट में मैं इतना पैसा दे रहा हूँ. इंटरनेट में मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे को चाहिए भाई अच्छा इंटरनेट. हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे जुल्फों के नीचे गर्दन पे. यार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है अगर इफ यू गाइस वांट टू फॉलो you can. I was thinking about to sharing such kind of learning snippets what I learned from each algorithm. It is a very simple and fun. I made it in this way. One thing I learned today from the rate limiter, this was from the day one, and in this one I made the token bucket which had allowed request and refill tokens. So this is how the uh, thing that can be implemented. So this is the core logic that I have mentioned. So it is very keen way. If you guys want such kind of things, I'll share more on the Instagram. For that you have to follow me and let me know that यार यहाँ पे तुम्हें चाहिए follow करने के लिए. So I'm also replying to messages over here as well. So please you can comment. Okay. So can I share my Insta? Should I share this? If anybody want to have this, uh, this is it. So yeah, please do follow. Oh, I got a question. Application they want to build, for example, uh, application they want to build. For example, if someone wants to create a Netflix-like streaming platform, they will simply select the features they need from a checklist, such as video uploads, video streaming, live streaming, user authentication, subscription, advertisements, analytics, notification, and more. Based on those selections, the AI will understand the requirements and automatically generate a complete backend with all the necessary APIs, database schema, authentication, storage, and server logic. Eventually, I wanted to generate the front end so the users. Acha, I understood. Working application instead of just code snippets. The goal is to build a powerful AI platform. So yeah, this can be a good idea, bro. But think about why any big company would use your platform. What you will provide a secure because it's a very private information that they'll share with you. All the data analytics and their video specifically unreleased footages you will have with you, and you have to take care of that. Right now, if you have seen the TCS Tata consultancy, they built the iPhone 13 and somehow their servers got attacked and the iPhone 18's photos got leaked, and that is something very nasty, you know. So guys, please do like the stream यार. अभी हमने just now I finished this rate limiter project with all the last remaining algorithm, which was the leaking bucket algorithm, and this is how it's working now. It shows 4 to 9, yeah. So it gives the timer and all.
So I just implemented that, and this was the last. In the last stream, I'll do come again online, and I'll explain you everything. अथर्व bro, hello bro, hello, कहाँ थे भाई अथर्व? How's your have what's your status on the Git क्या बोलते हैं उसको extension, Chrome extension, lead code extension? Is it working? Is it not? How is it? बताओ. तो यहाँ पे it's the end now, and the one thing that I have started a poll on that. I'll be making one video to make a little funnier side, because I don't want to keep this channel as a boring channel, because my energy is something different. I'm not a teacher, or I don't want to create tutorials or lectures or something. I want to enjoy the code, whatever the code I'm writing over here. So what I'll do, uh, I'll just make these algorithms fight each other to see which algorithm is the best among all. So whenever in future, suppose in future you if you want to implement rate limit, तुम्हारे मैनेजर ने बोला कि भाई अपने को rate limit implement करना है को और choose करो, हम bit for bucket use करने वाले हैं, and which algorithm is appropriate for us, then you will remember this video कि भाई ने 5 algorithm लेके we have made it fight, and we have got the answer ki which algorithm is best out of these 5 algorithms. Lead code extension is coming together. Yeah, that's a great news. Last stages. That's great. That's great. Please, यार मैं I'll be the first user on that. Git OAuth set हो गया है. I just need to set everything together. थोड़े एक दो दिन और. Best bro. Would you like to come and explain that whenever you are done on the stream, bro? I'll give you an opportunity to explain what you have built, and you can ask because there are many lead coders on this channel, and you can ask others to use your extension. So it can be a good testing for you and good exposure for you. Need document system design interview PDF. सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, अच्छा ये इसका इसका बोल रहे हो क्या ये? इसका लिंक मैंने डिस्कॉर्ड पे डाला था. लेट मी फाइंड द लिंक. मैंने किसको भेजा था? मैंने तुम्हें भेजा है क्या अथर्वा? डिड आई सेंड यू टू यू? नो आई डिडंट. मैंने किसी को तो भेजा है वो. मेरे को किसी ने इस पे ये किया था, मैसेज किया था, बनी. या दिस आई एम शेयरिंग ओवर हियर. ये लिंक अलाउ नहीं करता इवन दो इट अलाउड. मैंने शेयर कर दिया. जायफा, मेरे को तुम्हारा नाम प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा भाई, सॉरी. इतना इतना भी कुछ अरे ऐसे नहीं बोलते यार खुद के बारे में ब्रो. इतना भी कुछ खास नहीं, ये नहीं है. ऑलवेज अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, कभी भी ऐसा मत. अगर तुम तुम्हारे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो तुम बड़े लेवल पे कैसे पहुंचोगे? appreciate every fucking thing that you build, whether it's small big, because तुमने जो सोचा है वो किसी ने नहीं सोचा है. मतलब सोचा भी होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा. तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ गाइज प्लीज. I'll try ठीक से बनाना पड़ेगा अब तो. और I was getting too many loops. This is what the fun of doing everything in public, you can't do it in a wrong way, in a shortcut way. You have to do it correct, do it like the most appropriate way. नहीं तो मैं अगर ऑफ स्ट्रीम होता, ये प्रोजेक्ट बनाता, मैं बना के देखता, पहला एल्गोरिथम लिखता, हाँ ठीक है यार चलो हो गया ना, बाकी के भी ऐसे ही होंगे तो आई एक्सप्लेन. नो, डू इट राइट. बिकॉज अभी हमारे पास विंडो होता है, व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग द थिंग वी हैव द विंडो ऑफ डूइंग द मिस्टेक्स. डू एज मेनी एज मिस्टेक्स पॉसिबल, एंड देन एक्चुअल में जब काम आएगा ना तब हम कम से कम मिस्टेक्स करेंगे. सो ओके, मैं आई गेस ज़्यादा बकचोदी कर रहा हूँ. आज का तो काम हो गया है मेरा, पता है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम बचा हुआ है. तो इफ़ यू गाइज हैव एनीथिंग फॉर मी और समथिंग, देन वी कैन हैव. पहले व्हेन आई वाज स्ट्रीमिंग न्यू, आई यूज्ड टू प्ले चेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम विद द क्या बोलते हैं, विद द पीपल इन द चैट. इफ एनीबडी वांट टू प्ले अ गेम ऑफ चेस बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम, इट्स ओके, because I want to keep this stream as like
चिल एंड पॉसिबल, बिकॉज जो भी मैं यूट्यूब पे जाके कोई भी वीडियो देखता हूँ ना इस ट्यूटोरियल्स को, एवरीथिंग इज लाइक यू नीड टू नो दिस रेट लिमिटर, यू नीड टू नो दिस ऑल थिंग्स, दिस एल्गोरिदम, दिस सिस्टम्स। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई, ये सब आसान है, बस हम करते नहीं है। एक बार करने के बाद सब कुछ आसान, मजा, अगर हमने मजा ही लेना छोड़ दिया इन सब चीजों में तो क्या ही रहा भाई जिंदगी, इट विल बी अ हेल। कैन आई प्ले विथ समवन, play a coach, play bots, play a friend? Anybody want to play a game of chess? I was making this for myself in the first place, right? But then you said you also wanna use it, so I'm setting Git auth. नहीं तो I was just gonna set client secret for my Git repo and Git. Yeah, of course, bro. तभी तो ना, तभी तो ये फन मजा है इन सब चीज़ों में। गिट ऑथ का मेरे को ज़रूरत, हाँ ऑफ कोर्स मेरे को ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे लॉगिन कर पाऊंगा। ट्रू। तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो यूज़र्स मिल जाएंगे भाई स्ट्रीम से, सो विल मेक इट यूजफुल। कैसे करते हैं इसमें? प्लेयर्स, न्यू गेम एंड नॉट रैंडम। मैं खेलेगा चेस। नूब हूँ, हाँ मैं भी नूब ही हूँ भाई। ठीक है, एक गेम ये करते हैं कि लेट मी क्रिएट अ गेम, प्ले प्ले ऑनलाइन, custom challenge, let's play 2 to 1, okay, 2 to 1 because I don't wanna do this। और 5 मिनट का खेलना है तो 5 मिनट का खेल लेते हैं। कस्टम चैलेंज, नॉट रैंडम, फ्रेंड, नॉट फ्रेंड। अबे लिंक का ऑप्शन कहाँ है बहन? जो चैलेंज लिंक, या चैलेंज लिंक, यस आई एम सेंडिंग दिस चैलेंज लिंक इन द चैट, ज्वाइन दिस ब्रो, लेट्स सी। अगर मैं इस पॉइंट पे किसी को बोलूँ कि प्लीज लाइक द स्ट्रीम, इट वुडंट बी अ करेक्ट थिंग टू डू, बट प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम। Hey, it started with somebody of the stream. I don't wanna play this. How to abandon this game? Play online. क्या हुआ भाई? फिर से इस लिंक पे ज्वाइन करना। क्या हुआ अथर्व? आर यू एबल टू ज्वाइन इट और नो? बताओ जल्दी, नहीं तो मैं एक ऑनलाइन खेल लूंगा। Guys, whoever joining now, share your username of chess. My username is this. It's very weird. This is the my. I'm not able to copy this, bro. This is my username. Aim Hitman. मेरे को ये आयुष अल्फा बहुत ही खतरनाक प्लेयर लग रहा है भाई, जिस हिसाब से उसने पूछा। माउस कहाँ है अपना? सच कह रहा है दीवाना दिल। माउस तो कभी जिंदगी में काम नहीं करेगा मैकबुक पे, बहन का भाई। दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें मैंने। Guys, whoever joining now, I have just finished all the algorithms of the rate limiter, and now that I had time, so I usually play a chess of game with the people in chat.
So please don't mind it. It's something that it's a fun thing to do. क्यों भाई वापस क्यों ले लिया अब क्या करेगा भाई? So guys, please do like the stream. अगर किसी ने हेलो 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 अथर्व, आई वाज वेटिंग फॉर यू ब्रो. आज कुछ मजेदार हुआ? प्लीज प्लीज टेल मी. जस्ट जस्ट अभी एंड करके आया. ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड. अगर स्ट्रीम कर रहे थे तो दैट इज अलाउड. क्या फनी हुआ वो बताओ. नो ब्रो, व्हेन आई बोर्ड देन आई कैन प्ले, अदरवाइज नॉट. ओके ओके, सेम सेम ईयर. पता है द डाउन साइड ऑफ, अगर तुम बोर हुए हो और चेस खेल रहे हो, उसके चेस खत्म करने के बाद तुम एंग्री भी हो जाते हो. ये मेरे साथ होता है. खेलो भाई खेलो. ओ व्हाट यू टुक ब्रो? नाइस मूव बट just 2 minutes, let me pack up. Oh, okay, take your time bro. And please do like the stream yaar. Atharva, please do like a stream, huh? You are playing really good bro. You did good defense over here, I must say this. mm. I share your request. Yeah yeah, please do please do. We'll play a game. इसके बाद तुम्हारे साथ भी एक खेलेंगे हम. It have become automated. Just 2 minutes. Oh nice yaar. Too good bro. Bro, you are not 500 bro, you are more. Oh, oh shit. बहुत ही बढ़िया यार अथर्व. सॉरी, तुम्हारा भी नाम अथर्व ही है. दो अथर्व है अभी अपने पास. लाइक डूइंग ब्रूजिंग. या यस. So if I take this, it will be a check. You okay? You made a mistake over here. It's a mistake, bro. No, you are playing really good, but
A8. ओके, A8। A8 बहुत पहले था वो, मैंने लिया नहीं, वो रुक लेना चाहिए था एक्चुअली, बट नहीं लिया मैंने। Okay. Zaifa, you wanna? Today many people came to the stream. That's good, bro. Yeah. गुड गेम है। यू रियली प्लेड वेल। तुमने चालू थोड़ा सा ये हो गया एक मिस्टेक, देन उसके बाद यू ब्लंडर्ड योर क्वीन, बट यू आर प्लेइंग गुड। नहीं आता, नहीं आता है भाई तुम्हें, ऐसा मत बोलो। एनीबडी एल्स आल्सो वांटेड टू प्ले ना, सो आई विल शेयर वन मोर लिंक। अगर लेट मी क्रिएट अ लिंक, कस्टम चैलेंज 5 मिनट्स का ओब्लिवियन। एक एक मिनट, इसको खेलना था, अगर ये नहीं ज्वाइन करता है तो विल प्ले विथ यू। ओके, लेट्स प्ले विथ यू वन मोर टिल देन। I'm starting a project series from tomorrow. That's good, yaar. Should I show the thumbnail like it wasn't finished yet? Like, yeah, please do share. मैं thumbnail में तुम्हें बताता हूँ. I have created tons of thumbnails till now. तुमने वो किया क्यों नहीं लिया पीस? मैंने छोड़ दिया था वो पीस, मेरे को लगा तुम ले लोगे, इक्वल हो जाएगा। फ्री पॉन अगेन। आता तरी देवा मला पावशील का, सुख ज्याला म्हणतात ते धावशील का, आता तरी देवा मला पावशील का, सुख ज्याला म्हणतात ते धावशील का. Hmm? What is this? Why? Let me commit this file. So implemented leaking bucket. So why this, bro? Don't do this to me. Uh,
शेयर शेयर विथ मी इन प्राइवेट ब्रो अथर्व, मैं तुम्हें वहाँ पे अच्छे से रिव्यू देता हूँ. या तो इट्स ओके फ्रेंड, आई एम प्लेइंग वेरी बैडली. नो नो, यू आर प्लेइंग नाइस. इतना खराब नहीं करते. या मैं देखा, मैं बताता हूँ तुम्हें स्ट्रीम के बाद, मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ कैसे इम्प्रूव करना है उसमें. आई हेल्प यू. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ. If I do this, it will be this. ये मेरा माउस काम नहीं कर रहा है साला. नहीं तो मैं ये मूव्स करता ऐसे. It's a mate, bro. If you have, yeah, let's let's do little fun. Don't will not end the game over here. We'll do this because I have to commit the files implemented leaking bucket algorithm. So this is the end for rate limiter. Hey, you didn't take the piece. Why you didn't take the piece? क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसे? मेरे को लगा तुम ले लोगे. मैं ये ले लेता हूँ फिर. I gave you a chance, but not now. So let's commit. Let me get the tab. This git push, and now my pass key is like password. Yeah, pushed. I'll create a documentation. Don't worry, guys, so that you guys can follow this. Izypha chase. Okay, okay, bro. After this, then we'll play one game. Don't worry. Let me find a way to finish this game very quickly. I can do this, but no, but piece is not this. If you take this, I can take this out. Yeah, I'll take this out, and then if you wanna take, we'll take. You don't wanna take, bro. You don't wanna take. Let's have this then. You chose it. I didn't. आता तरी देवा मला पावशील का सुख ज्याला म्हणतात ते दावशील का. uh, I can't search your name, I guess ना. Let me search your name, bro. Eyes I purchase. इसमें स्पेस है भाई, स्पेस नहीं होता इस नेम में ना. uh, इसमें से कौन सा है भाई? No results found. No results found. If you wanna play, bro, I'll create a challenge. Play online. Custom challenge. Challenge link. Copied this link. You can join Ayuzafa. This is the link. uh, अब तो भेज दिया डीसी. नहीं, ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ. या फिर सिस्टम कुछ अलग है. नहीं, वी आर नियर टू रीच 1K subs, guys. Please make sure to subscribe. Yes, bro. यार, anyone else wanna play? I wanna I wanna go one more time. एक अच्छा गेम तो रहेगा. ये लिंक से ज्वाइन कर लो, ब्रो. आयु जाइफा 18 ऐसे. इफ आई सर्च योर नेम, नहीं आएगा. अरे वो सर्च ऐसे काम नहीं करेगा ना, बिकॉज वी आर नॉट रिलेटेड और समथिंग. एग्जैक्टली वो नहीं देगा सर्च. ओके, इफ दिस इज यू, देन आई एम सेंडिंग यू अ चैलेंज. यूजर नेम चैलेंज भेजा है मैंने. प्लीज चेक द चैलेंज. अथर्व, मैं तुम्हें बताता हूँ. द मॉडरेटर अथर्व, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? डोंट वरी. ये I'll tell you how to build the thumbnail, okay?
आ, ज़्यादा लोग ज़्यादा लोग है क्या? 4 प्लेयर वेरिएंट है, 4 प्लेयर वेरिएंट तो मैं कभी खेला नहीं. आई हैव सेंड द चैलेंज, इफ नॉट आई विल प्ले वन मोर विद द अथर्व. डू जॉइन द गेम. या जावा स्प्रिंग बूट वर्सेस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस, दोनों में से क्या करना है? एज अ बिगिनर तो यार जावा स्प्रिंग बूट करना चाहिए, क्योंकि नोड जेएस और एक्सप्रेस ये तुम करने में तुम्हारा ये. प्लीज प्ले. अयुजैफा प्लीज प्ले, गेम विल अबैंडन. अबू हुजैफा इज योर नेम. It started with another player about. मजा आता है 4 प्लेयर वेरिएंट, लेकिन हम 3 लोग हैं ना, चौथा प्लेयर कहाँ है? यार यू डिडंट स्टार्ट द गेम ब्रो. प्ले ऑनलाइन. अथर्व प्लीज स्टार्ट ऑन द स्प्रिंग बूट. डोंट स्टार्ट ऑन दिस, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. नोड जेएस एक्सप्रेस जो उसके सिंटेक्स है ना, बहुत ही अलग अलग है. अबाउट. आई एम सेंडिंग वन मोर चैलेंज ब्रो, दिस टाइम तो प्लीज प्ले. 108. लाइक एक चीज चूज करे, द जावा स्प्रिंग बूट स्टैक और देन मीन स्टैक. जावा कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए ना वो 10. हाँ अच्छा, तुम ये अथर वो 108 बोल रहे थे क्या? मेरे को नहीं पता था. अरे ये मे बी ही हैज समथिंग ट्रिक्स. ब्रो, आई गेस यू आर चीटिंग ब्रो. इफ यू आर चीटिंग देन प्लीज लेट मी नो. हाँ, ऐसा मत करो मेरे साथ. आहा आहा आहा. ब्रदर, यू आर चीटिंग ब्रदर, आई गेस. नो, यू आर नॉट चीटिंग. ओ, आर वी हैव वी. इंटर्नशिप लग रही है मेरी एज ए आई इंटर्न, बट अनपेड है. अरे यार ठीक है यार, ठीक है, अनपेड है तब भी चलेगा. इट्स कॉन्ग्रेट्स ब्रो. अथर्व. हाँ मैं वही देख रहा हूँ, 108 कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को. 108 कैसे भाई? दिस इज अ फ्री पॉन. नो, नो चीटिंग, ओके. आई एम जस्ट सेइंग. पैसे दिए नहीं. ठीक है भाई, कुछ कुछ चीज़ें स्किल्स के लिए कर लेना, कुछ स्किल्स करके एक्सपीरियंस ले लेना. भाई तुमने ऐसा क्यों किया? फ्री क्वीन दे दिया यार. दिस वाज लाइक, ये क्या था? F5 क्यों खेला तुमने? आ, तब तो ठीक है भाई. लोग यहाँ 60-60 हज़ार दे रहे हैं ओनली सो दैट इंटर्नशिप टैग मिल जाए. ये बड़े कॉलेजेस में बिट्स. अच्छा ऐसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है? लेट मी चेक माई गिटहब रेपो फॉर दिस. नो, मैंने कुछ रीडमी फाइल्स ऐड किया है क्या इसमें? रेट लिमिटर. This shit is working. Yeah, documentation is there. It app it correctly explains what I did here. Yeah, because your hard work. Again, congratulations. Yes. Stockfish sacrifices में से होगा कुछ. Maybe.
डर तो लगता है ऐसे अगर कोई खेलता है एकदम अलग अलग। हम भी करेंगे कुछ सैक्रिफाइस, डू वी हैव सम फन, वी हैव +9 सो लेट्स सैक्रिफाइस द क्वीन, लेट्स डू इट, यू नो, लेट्स सी कि हम कुछ कर सकते हैं क्या उसके बाद। गुड। आता तरी देवा मला पावशील का, सुख झाला म्हणते ते दावशील का, आता तरी देवा मला पावशील का, सुख झाला, अरे यार आई ब्लंडर्ड पीस बाय मिस्टेक। This is a game of blundering. I blundered one more pawn. Now he blundered his piece. आता तरी देवा, गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार। मैं जब तक मेरे को 15 लाइक्स नहीं दिखते यार अच्छा नहीं लगता। मैंने इतना सारे एल्गोरिदम्स कोई किसी ने भी नहीं किया होगा यूट्यूब पे। द ओनली थिंग आई एम डूइंग हियर, रेट लिमिटर के सारे टाइप्स के एल्गोरिदम मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। देन व्हाई यू आर डूइंग दिस विथ मी? प्लीज डोंट, because likes is something what makes a difference. I don't want you guys to subscribe to the channel or something, but do like the stream, at least comment out कि तुम लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा। पर्पस मूड हो रहा। यस। यार अपने को जो मजा आ रहा है ना वही चीज करनी है जिंदगी में, पता है। अपन इतने सालों तक अपने को सब लोग चूता बना के आ रहे कि नहीं भाई, बी सीरियस इन लाइफ, सीरियसली ये करो, सीरियसली एक बार ये कर लो वो कर लो, सब कुछ नहीं होगा भाई। लौड़े ही लगते सीरियसनेस, सीरियस होके। नाउ ऑनवर्ड्स विल डू वॉट एवर द फक वी वांट। क्यों भाई क्यों? I'll make 3 queens now. I'll make 3 queens. सही बात है, 60,000 विल वही हो सकता है और जगह पे और चीजें हो रही हैं। अच्छा, वो बीच में से चेंज कैसे लग गया? एज सून एज यू सेड चीट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वी आर थिंकिंग टू मच। ऐसा कुछ नहीं किया उसने भाई ने। इज प्लीज करेक्ट। मेरे को शुरुआत में लगा क्योंकि अब्रप्ट मूव्स नहीं खेलता ना, नोबडी प्लेज लाइक F5 इन द बिगिनिंग, सो आई डाउटेड कि भाई इज इट समथिंग स्केरी। So, but after that he is not playing any scary. But now I'll make the 3 queens as I said. So let's make the queens now. Let me sacrifice this. Let me do this. Let me do this. Oh, oh, अच्छा, अच्छा। इधर चला I want. Can I make 3 queens in 15 seconds? 14 seconds, 13 seconds, 12 seconds, 9 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, and no, he's resigning now. uh, अच्छा हुआ हम लोगों ऐसे नहीं है, वरना शायद HTML का कोर्स, क्या HTML का कोर्स, यू वांना प्ले वन मोर? क्या मैं नहीं पढ़ पाया ये? अच्छा हम ऐसे नहीं है वरना शायद HTML का कोर्स बाय कर रहे होते 5-10 हज़ार में। हाँ। इधर 5 हज़ार में अनपेड दे देते हैं, बट कोई गोस्ट कंपनी में लग जाएगा, उसका कोई वेबसाइट नहीं कुछ नहीं। ओके, गॉड सेव्ड अस। यस, 7 queens एग्री, या टोटली। ए प्ले नो, इज नॉट प्लेइंग।
आई एम सेंडिंग रीमैच. नो चीट सैमसंग. अरे आई वाज जोकिंग ब्रो. अगर तुमने एकदम से F5 खेला ना एकदम वो हिट हो गया कि भाई एक चीटिंग गेम हुआ था उसमें F5. इफ यू रिमेम्बर निखिल कामत ने इसके अगेंस्ट खेला था विश्वनाथन आनंद के अगेंस्ट समय रैना के स्ट्रीम पे एंड ही प्लेड F5. सो आई थॉट ब्रो आर यू प्लेइंग आर यू डूइंग चीटिंग बिकॉज ही डिड चीट इन दैट गेम. HTML वाले मैसेज के ऊपर पढ़ लो ना. ओके मैंने मिस कर दिया क्या. स्टॉक फिश मैंने पढ़ा. यू गॉट बिकॉज यूर हार्ड या ही इज रियली हार्ड वर्किंग. Be so unpredictable that people think you are using AI. True. ऐसे ही मेरे को इसके बारे में लगा अबू के बारे में अभी. आई थॉट ही प्लेड सो अनप्रिडिक्टेबल. आई थॉट ही इज चीटिंग. क्या बात कही यार लिटरली. क्रेजी सैक्रिफाइस. ये पढ़ा मैंने. सही बात है 60,000 हो सकता है और जगह पे. यस आई एम नॉट श्योर कि ऐसी चीजें हो रही है बट ये गलत चीज़ों का जानकारी निकालना भी अलग चीज. बहुत ज़रूरी है भाई. गलत चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है. हालांकि हम यूज़ ना करें गलत चीज़ें बट गलत चीज़ें पता होना ज़रूरी है. He sent a challenge, so let's play the last game. No, sorry bro, I said cheating, but I was just joking. Let's play something that you were playing. What we can play? We can play this. We can play this. We can play this. Then we can play. Oh, इधर चला मैं उधर चला जाने का. Guys, can you in the chat please suggest me something good Hollywood movie to watch? Not scary first, not romance and all. Of course, you are not that kind of audience. I know. कोई ऐसे स्पेस फिक्शन वाली ना मेरे को बहुत पसंद है. जैसे क्या मूवी देखा था यार मैंने रिसेंटली. वो मार्स पे जाके ये करता है ना सब घास फूस उगाता है. क्या बोलते हैं आलू उगाता है मार्स पे जाके. दैट इज अ वेरी गुड मूवी. समथिंग लाइक दैट. लेट्स डू दिस थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ. हाँ मार्शियन मार्शियन. यस यस यस. मार्शियन बहुत ही अच्छी मूवी लगी यार मेरे को. मैंने 2 बार देखी वो. इस बार मैंने मजाक मजाक में दे दिया पीसेस. मेरे को लगा है लेकिन ये भाई अभी बहुत अच्छा खेल रहा है. You should know these things otherwise genuine people gets cheated on and taken advantage. Yes bro. भाई बहुत ही अच्छा बंदा ना इतना अच्छा नहीं है पता है. मैं दूं या ना दूं. चल नहीं देता मैं. क्वीन नहीं देना मेरे को मेरा. पहले दे रहा था तुमने लिया नहीं. अब मैं नहीं दे रहा. गाइस यार लाइक कर दो यार स्ट्रीम को ना. ऐसे ना करे जनाब. हैव सीन शटर आइलैंड और इंसेप्शन. हाँ हाँ ये देखा है भाई. If I take this, you will take this, but what you will do after this? I can have some fun over here. If you take this, my pawn, then I can take your this. Okay, take this. It's okay. I can trap your queen. You know that, na? In 2 moves, I can trap your queen. शटर आइलैंड और इंसेप्शन दोनों देखिए भाई. पुरानी हो गई है ना. मूवी है ये भी. एंडर्स गेम. एंडर्स गेम कहाँ लिखा है. एंडर्स गेम कहाँ लिखा है इसने. मार्शियन यू शुड नो. I have made a decision to not copy any tutorial project. खुद से बनाना सीख सीख के हजारों लोग वही. यस
yes, true, bro. Absolutely fucking crazily true. खुद से बनाओ भाई चीजें, हम इंडिया में बहुत पीछे हैं इन सब चीजों में, इनोवेटिव माइंड से हम बहुत दूर चले गए. वी हैव टू बी इनोवेटिव. दुनिया गलत है, शुडंट मीन इवन वी शुड बी, बट उनकी भी मजबूरी होती है. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. If I do this, you will take this. Oh, nice यार. You have very nice move over here. Uh, उनकी भी मजबूरी होती है. True. I can understand because my college will not give me a degree without internship. Oh, okay. That's a good thing, to be honest. What you are trying to do over here? I can kick you out. Oh, okay. I made a mistake. मिस्टेक किया भाई हमने यहाँ पे. अथर्व भाई, तुम दोनों का नाम अथर्व है अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो. अथर्व भाई, तुम्हें तो मिला है इंटर्नशिप. यू आर लकी. आई थिंक आई लाइक एट दिस टाइम यू आर, आई थिंक टॉप 5-10 इन योर बैच राइट नाउ. और अरे अबेंडन क्यों किया ब्रो? यू आर प्लेइंग रियली गुड नो. आई मेड मिस्टेक्स. यू आर प्लेइंग रियली गुड. नोप एवरेज. आई गॉट प्लेस्ड ऑफ कैंपस. ओके. चलो तो क्या करना है अभी? एंड करें? गाइज अगर ऐसे पोस्ट वगैरह कुछ चाहिए ना तो मेरे को प्लीज़ बताओ, मैं अभी भी डाल रहा हूँ पोस्ट. सो तुम लोगों को भी अच्छा लगे. आई वांना गिव मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. ओके, अबू भाई ने फॉलो किया है. बाकी लोग भी करो. ये क्या आ गया? फोटो बाय इंडी ऑन जून. दे देखो समथिंग इंस्टाग्राम से क्या ग्लिच आया. ग्राफिक डिजाइन टेक्स्ट सेज इंडी डेव पैक abstract class. Why it's reading the text from the image? So that means, see, twilight cloud palm and trees text. The Instagram tries to take out, see from this glitch you can see, it tries to take out, extract the images what we are uploading, and it trains the things from this. Photo by IndieDev on June 29 this. Maybe a graphic of text that says IndieDev package learning this abstract class this. ठीक है, ये तो कोड है इसने ले लिया. इस फोटो में भी लिया. एक मैंने सिंपल सा मेरे विंडो के बाहर का फोटो डाला है. फोटो बाय IndieDev. मे बी एन इमेज ऑफ ट्वाइलाइट क्लाउड एंड पॉम ट्रीज. कितना गंदा है इंस्टाग्राम. हाँ, कितना गंदा है इंस्टाग्राम. मतलब इंस्टाग्राम इज जस्ट रेज बेट टूल, इसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं आना था. तो मैं कभी भी क्रिंच चीज़ें नहीं डालूंगा इंस्टाग्राम पे. आई कीप इट वेरी क्लीन. आई विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस. हाँ, मेरे को लगा तुमने अबेंडन किया यार. मे बी द नेटवर्क इशू और समथिंग ईदर ऑफ आवर साइड. इट गॉट अबेंडेंड. यू आर प्लेइंग वेरी गुड. यू ऑलमोस्ट won द गेम ब्रो. मैंने नहीं अबेंडन किया. यहाँ पे रिव्यू आता है ना, ऐड कलेक्शन क्लासरूम. Let's see by this move. See, you were winning this game, black. अगर इस मूव के बाद तुमने अगर इसको ले लेते ना, इफ यू वुड हैव टेकन दिस, अगर ये ले लेते तो तुम ये ले सकते थे तो फ्री रुक. सो ये गेम ऑलमोस्ट तुम्हारा था. यू प्लेड रियली नाइस. नेक्स्ट वी विल प्ले. मेरे को लगता है अभी हो बस करते हैं भाई, क्योंकि ये स्ट्रीम मैक्सिमम चेस का हो जाएगा फिर. इफ आई गेट वन मोर लाइक देन आई कैन थिंक ऑफ दैट. किसी ने लाइक नहीं किया यार. आई एम नॉट, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये लाइक्स नहीं कर रहे हो तुम. ओ अब बोलूँ क्या भाई, आपने तो गेम ही पर ट्राई किया था बढ़ने का, बट फैमिली ट्रबल्स के कारण कुछ एग्जाम्स अटेंड नहीं कर पाया था. और
पढ़ भी नहीं पाया. Yeah, problems happens, bro. Both the Atharvas have this no average, but I 7.6 CGPA. अच्छा है यार. uh, अभी जो ट्राई कर सकता हूँ कर रहा हूँ. रुकी रोके कुछ नहीं होगा. यस. व्हाट अ लाइन ब्रो. क्या लाइन कही है भाई. इसी हाई नोट पे मेरे को लगता है अभी एंड करते. ठीक है. He said very nice line. So we played two games. No, we played multiple games with two players. It was fun. You almost won, bro, Abu. You almost won, but game मैंने abandon नहीं किया है. I'm not. I haven't. तुम stream पीछे जाके देख सकते हो भाई. मैंने कुछ नहीं किया है. ठीक है. बुक का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है. और गाइस किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिंक्डइन को फॉलो करना है मेरे को, तो फॉलो कर सकते हो. इट्स ओपन. कोई इशू नहीं है. या डिस्कॉर्ड पे मतलब इट जस्ट द वेज so that you can text me. You can DM me on any of the platforms. So no worries. Oblivion. Yeah. Hello, bro. अथर्व. ओके. तो मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर दूंगा. दिस शिट इज़ वर्किंग ही है अभी फ़िलहाल यहाँ पे. मैं अपडेट कर दूंगा एंड आई कम अप विद द एक्सप्लेनेटरी स्ट्रीम. उस पर मैं पूरा अच्छे से मस्त एकदम मस्का मार के एक्सप्लेन करूंगा, जिससे मेरे को भी समझ में आएगा, तुम लोगों को भी समझ में आएगा. आई होप सो. और फिर मज़े करेंगे. और एंड हाँ, सैटरडे के दिन आई एम गोइंग टू ए आई इवेंट वी वर्क्स में. सो विल सी अगर वहाँ पे कुछ हैकेथॉन वगैरह कुछ होता है तो आई स्ट्रीम फ्रॉम देयर एंड विल सी वी कैन बिल्ड इट समथिंग टुगेदर. इफ़ यू गाइज वांट टू जॉइन द स्ट्रीम, डू जॉइन द स्ट्रीम एंड विल सी हम क्या कर सकते हैं ए आई इसमें. सो देर इज समथिंग न्यू. Like the stream, guys. Yes, please do like the stream, yaar. I'm not seeing that last like. Don't make me. You will eventually like. You have to eventually, yes. Don't make me say that thing. Then you will have to eventually like, yes. Uh, लाइन तो नहीं. लाइन तो नहीं थी बट आप बोले तो वो बोले तो हाँ. थैंक यू. यस. आई थिंक द रीजन इज स्लो इंटरनेट. यस. दैट्स व्हाट आई सेड. मेरा तो 100. मेरे पे डाउट मत करो भाई. मेरे इंटरनेट स्पीड टेस्ट मेरा एकदम ही 1000 एमबीपीएस स्पीड है भाई. सैटरडे को पुणे में. यस यस एआई इवेंट. यस यस देयर इज एन एआई इवेंट. अगर मैं लेट मी चेक माय कैलेंडर. आई गॉट एन इनवाइट. या सैटरडे को है वीवर 11 से 5. सो आई एम नॉट शेयर मोर डिटेल्स ऑन दैट. क्या ही करोगे अगर तुम आ भी जाओगे डिटेल्स देख के. सो या हड़पसर में है. सो लेट्स सी. आई हैड आई हैव दिस कॉल. ओके. 91 एमबीपीएस. सो है मेरे पास स्पीड भाई. अपने पास है स्पीड. एंड गाइस तुम लोग है ना मेरे को कमेंट्स सेक्शन में भी बताओ तुम लोगों को ना कैसे लग रहे क्या नहीं लग रहे वीडियोस, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या. आई एम गेटिंग थोड़े बहुत कमेंट्स बट आई रियली वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव. मुझे सब्सक्राइबर वगैरह से कुछ मतलब नहीं है. आई रियली वांट to know what my audience is thinking, what they really want, how the things are progressing. So yeah, uh, it's an invitation based bro. Invitation है इसके लिए. सीट वगैरह बुक हुआ है. So I don't think if possible I'll stream from there so you can join. I'll try to stream. मेरे पास एक प्रॉब्लम है. मेरे पास मैकबुक है लेकिन मेरे पास गूगल पिक्सल है, तो ये कैमरा इसके साथ कनेक्ट नहीं होता. तो आई वुड हैव स्ट्रीम दी होल इवेंट फॉर यू. और मेरे को खरीदना नहीं है आईफोन. ठीक है गाइज. चलो. तो इफ यू मेन लाइक, इफ यू नॉट यू ब्रो. बाय कम्युनिटी ऑफ मैन. यस. लेट मी एंड द पोल दैट आई वाज डूइंग. मेरे पास से बहुत ही अच्छा आइडिया है ये करने का. I'll do anyways. The poll says what the poll is saying. 90% yes.
Yeah, nobody said end the stream now. So yeah, we'll do that. And जिसने भी like नहीं किया है, please do like the stream, guys. Don't make me say this again and again. And comment करके मेरे को बताओ तुम लोगों को कैसा क्या लग रहा है क्या नहीं. I have made the explicit playlist for you if you guys want to watch. Because I'm thinking one problem over here. These streams are really long, you know. So how guys you can catch up with all of these things. So I thought I'll add one video at the end of every stream, which will be the explainer video, and I'll try to keep that video under 10-20 minutes. 10 minutes so possible nahi, at least 20 minutes, 30 minutes का video I'll keep. Okay, then there is Java collection stream I started. एक ही वीडियो किया अभी एक ही स्ट्रीम किया लेकिन I want to really progress on these concepts collection generics streams and all. I'm not that good at lead code में I'll come back to it in short period because lead code पे हमने बहुत किया है and I'm not seeing that much output and I'm not getting that much fun. This JWT वाला JWT authentication token was a really good end-to-end project that I made first on this stream. So there are these videos you can see this, and then short URL. Yeah, short URL is a really fun and short video. I have made a post for this, so you can watch these videos for short URL. इसका मैं video अभी मैंने record किया है कल ही record किया है मैंने video. I'll post the video for that. So that you can watch it. मैं उसका system design diagram दिखाता हूँ आप लोगों को. So see if you guys can see मेरे पास होगा ना ये downloads में होगा. So see this is the URL shortener architecture diagram. यही मैंने post किया हुआ है इसके ऊपर video आ रहा है. It has two main APIs and it is a very good, very small system design का question so that you can also have fun around it. So this is where I posted. I'm not seeing many likes, but yeah, I'll still keep posting because I don't know कि YouTube is suggesting it to you or not. And then what else playlist I have? Yeah, that much I have till now. I'll be doing many more things. Resume भी बनाना है, ये सब भी करना है, बहुत कुछ है. That's good. Yeah, Michael is nice. Movie you asked for. Oh, okay. हाँ, let me see. Michael कौन सा है? Michael. अच्छा माइकल जैक्सन का ये तो थिएटर में आया था ना अभी. देखिए क्या अब मेरे को स्पेस फिक्शन पे मैंने बोला स्पेसिफिकली एंडर्स गेम रिकमेंडेड अगेन एंडर्स गेम. ओके एंडर्स गेम. ओ ऐसे मूवीज मेरे को अच्छे लगते हैं लेकिन 6.6 है रॉटन टोमेटो 63% ऑलरेडी वॉच. नो कहाँ पे ये मैं देख सकता हूँ. प्राइम वीडियो. आई कैन वॉच दिस. मेरे को ऐसे मूवीज थोड़े अच्छे लगते हैं थोड़ा एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह ये सब. अगर इफ यू गाइज हैव वॉच दिस मूवीज. स्ट्रीम हेल्थ इज गुड. एंडर्स गेम इस पे देख लो. इस पे देख लो मतलब नहीं समझा मैं. अच्छा किसी ने लाइक कर दिया भाई फाइनली इतना बोलने के बाद. नाउ आई एम सीइंग 10 लाइक्स. ठीक है. आ, ये भी देख लो. अच्छा अच्छा तुम बोल रहे हो ये भी देख लो. ठीक है मैं देखता हूँ. तुमने एडिट किया है क्या मैसेज? रेडी प्लेयर वन. अच्छा रेडी प्लेयर वन वो मैसेज मेरा गायब हो गया था. रेडी प्लेयर वन 7.4 इसका रेटिंग अच्छा है. क्या है इसका स्टोरी? When the creator of virtual reality world called Oasis dies and leaves challenge. Oh, okay, this looks nice. Okay, ये देखते हैं. ए अवेलेबल टू रेंट बड्डी. ठीक है ये देख लेते हैं ब्रो अथर्व. और मैं बताऊंगा तुम्हें ये देखने के बाद. मेरे को घर भी साफ करना है. ऊपर लिंक दी थी इस पे देख लो मैसेजेस के. लिंक नहीं शेयर कर सकते तुम. ये मेरे आई एम नॉट डूइंग दिस. यूट्यूब हैज दिस रेस्ट्रिक्शंस दैट
you cannot share links other than YouTube URL. So at least it should be a YouTube URL if you want to share. अभी इतना ही याद है, ठीक है अथर्व, थैंक्स फॉर दिस। ठीक है, मैं ये देखता हूँ। चलो गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कम्युनिटी सेक्शन कि तुम लोगों को कैसे लग रहा है, क्या नहीं। आई रियली वांट टू नो। आई प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल, वो मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे लेकिन आई एम नॉट कनेक्टिंग विथ माई कम्युनिटी। आई वांट टू कनेक्ट विथ माई कम्युनिटी, तो तुम मेरे को कहीं पे भी मैसेज करो, लिंक्डइन, इंस्टा, डिस्कॉर्ड या ईमेल, एनीथिंग। So okay, चलो, thank you all, bye, and have a nice night. जितना भी, have a good day. A new day has started. रेंट क्यों करोगे? नहीं नहीं, रेंट नहीं करूँगा। I'll download something from pirated copy. लिंक नहीं है, तुम डिस्कॉर्ड पे लिंक शेयर कर दो अगर लिंक है तुम्हारे पास तो, क्योंकि यूट्यूब चैट में तुम लिंक नहीं शेयर कर सकते हो, यूट्यूब restricts this. So चलो, बाय। यस, चलो गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। जिसने भी लाइक नहीं किया है, प्लीज प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम, डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट। तुम जब एक दो बार चैनल विजिट करोगे, वीडियोस देखोगे, तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, दिस इज माय काइंड ऑफ अ कंटेंट, देन ओनली सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट। मेरे को फालतू में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। एंड प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम। लाइक स्ट्रीम करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आई विल बी ऑनलाइन, दिस स्ट्रीम विल बी सजेस्टेड इन योर फीड, in your home page, in your shorts feed, in your notification, and then you will get to know कि this guy is again streaming something, so let's join. And then join, tune in again, and उसके बाद भी तुम्हें if you liked whatever I'm doing here, then you can subscribe to the channel. So till then, take care, goodbye, and thank you all for joining. ठीक है, Discord, yes. Thank you all. Let me change the mood. कहाँ गया मेरा Discord?